morning and welcome to today's class. Class is on the topic of motion in a straight line or one-dimensional motion. In one-dimensional motion, we have had already discussed the graphical representation between voltage, between the velocity and time, and displacement and time, etc. And we have also seen different various situations how the graphs are drawn. And now we have to take the main mathematical part of the chapter. This chapter is totally based on mathematical derivations. They include the kinematics equation, the kinematic equations of motion that we discussed. Equation of uniformly accelerated motion. When a body moves naturally, we have seen there in the previous part when we have had the graphs between velocity and time. There you can see that in some cases the velocity increases uniformly with time. Then it is the case of uniform. It is not. I won't say uniform, but it increases uniformly with time. And in that case, we will definitely have one thing that is called uniform acceleration. But in case we have some parabolic graph between v and t, then if it is bent upward, then we can have accelerating motion, that is changing acceleration. तो हमको changing acceleration वाला portion नहीं लिखना है, हमको ऐसे बॉडी का सिस्टम लेना है जहाँ पे एक्सीलरेशन को हम लोग फिक्स मानेंगे, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगा. The first equation of motion is, we know that it is very common, v equal to u plus at, जैसे आप लोग पहले भी जानते थे, वही चीज यहाँ पर बता रहे हो. Let an object is moving with a constant acceleration along a positive direction of x-axis. Constant, ये acceleration कितना है? a. यहाँ पर दिया हुआ डायग्राम, ये कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर हमने वेलोसिटी काउंट नहीं किया और यहाँ पर टाइम भी काउंट नहीं किया, चल रहा था यहाँ से और आगे से बस चल रहा है. Now at this point its velocity was v naught. When time was counted, time was considered to be 0, and after time t equal to t, its velocity becomes v. This is the general straight line motion. You can see here the body is moving with a constant acceleration a. Okay, and now from the definition of acceleration, that is a equal to change in velocity upon time taken, v minus v naught upon t minus 0. We have this thing. You can get this formulation, and after this we may have this formulation. You can very easily have the same thing in the equivalence of v equal to u plus at, where we have taken initial velocity as u. Here we have taken v naught. They are the same thing. It is not a different thing. Now the same question, same equation can be solved even by using calculus. You know that in the previous, first chapter itself, we have had some discussion about the mathematical applications, where we discussed something about integration and differentiation. Okay, we have not to discuss much, but we have to consider that acceleration can be written as rate of change in velocity in the form like dv upon dt. Okay, that means a into dt equal to dv. When we integrate both sides with limit, then we have 0 to t, and it is a dt equal to v naught to v dv. Clear? And that means we have here a is taken outside the integration, t limit is 0 to t. ये लोअर लिमिट करते हैं, इसका अपर लिमिट करते हैं, तो 0 to t ऐसे लिखते हैं. यहाँ पर लोअर लिमिट का इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल लिमिट क्या है, अपर लिमिट v. तो इसके जगह हम लोग v माइनस v नॉट लिखेंगे, यहाँ t माइनस 0, तो at. तो अल्टीमेटली वी गेट द सेम इक्वेशन which we have had in the general method, and this is the calculus method. These are two methods. They are very important. In all the equations of motion, we have to use these two methods. Okay, one is general method
other is the calculus method. Okay. Next we discuss the next equation. Yes, now the second equation of motion. You must know, you must have seen in class 9 that it is equal to S is equal to ut plus half at square. Okay. And here it is not S is equal to ut plus half at square, but rather in place of u we write v naught. Okay. Let us see how we solve this. Very simple. Average, when we discuss average velocity, we know it is the displacement upon time, and displacement is always written, that is final minus initial displacement upon t, this t minus 0, this one. In other words, we can say x minus x naught equal to a average into t. जब दो ही खाली वेलोसिटी दिया है, स्टार्टिंग और फाइनल, और बीच का और कोई डेटा नहीं दिया है, तो हाउ वी डिटरमाइन द एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम. एक क्लास में एक बच्चों को कितना मिनिमम मिला वो मालूम है, कितना मैक्सिमम मिला, और बीच का कुछ नहीं मालूम है, तो और कोई अरिथमेटिक मीन तो नहीं निकाल सकते हम लोग कोई और मेथड से. वी जस्ट हैव u प्लस v बाई 2. तो वही यहाँ पर भी है. हियर ऑल्सो द एवरेज वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाई v नॉट प्लस v बाई 2. Okay, and this is placed in this equation. Okay, now we take from our first equation of motion, from first equation v equal to v naught plus at. In place of this v, we change it by v naught plus at. देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे ये आ गया तो क्या हो जाएगा, v नॉट प्लस v नॉट बिकम 2v नॉट, ये t से मिलकर v नॉट t, 2v नॉट t, and this is a is already there, 80 into t, 80 square. Ultimately we have this much. And when this is placed in this equation, from this what we get, x equal to x naught, because x minus x naught was there, x equal to x naught, v naught t plus half at square. We rather write x minus x naught as s, therefore x naught को उधर ले गए, s is equal to v naught t plus half a t square, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं s equal to ut plus half a t square, and u के जगह v naught लिखा है, nothing more. In ordinary book you can get till u, but in NCERT we write it by v naught. Okay, this is how the general method of the question. Now if we have to do the alternating method, what is alternative method? Alternative method is your calculus method. Let us see how we do by calculus method. There we have the definition of velocity, v equal to ds upon dt. Very obvious, ds upon dt. We can write v dt equal to ds. आप याद रखिएगा कि यहाँ पर s लाना है तो s केवल इसी फॉर्मूले में आता है. इन केस ऑफ अदर फॉर्मुलेशन लाइक वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के डेफिनेशन dv upon dt, s नहीं, तो यहाँ पर s लाने के लिए we have to do like this. Okay, after getting this, what we get, we have to integrate both sides. When we integrate, we have to give some limit. Limit is at initial velocity. How much? Its initial velocity was. Okay. Before we write anything, I must tell you one thing, that we have to state, because v is v can be written in terms of t. Okay, v can be written in terms of t. Therefore, before we write, यहाँ पर मेन डिफरेंस किसका है, t है, तो we take it from t to t. 0 to s, इसमें कोई डाउट ही नहीं. After this, we have 0 to t, v naught plus 80, v naught plus 80, and then dt. 0 to s ds. Remember, here we have again used first equation, v equal to v naught plus 80. वो फर्स्ट नियम में भी देखा है, फर्स्ट कैलकुलेशन में भी देखा है, इस सेकंड इसका जो कैलकुलस मेथड है, इसी सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देयर आल्सो वी यूज द
first equation of motion like this. After this, we are having two integration v naught dt, दूसरे वाले में a बाहर, it is t dt, और यहाँ पर सीधा सीधा s आ गया, 0 to s. Here we can write v naught taken out, t 0 to t, a outside, t square by 2, integration of t is t square by 2, 0 to t, s minus 0. Here we can have v naught t plus a t square by 2 equal to s. We can directly have this thing. There is no x minus x naught type something which we have had in the previous calculation, but in the calculus method we can directly have the expression in terms of s. Yes, sometimes you can change, you can replace v naught by u, उसको कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट आ गया. अब हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको पूरा मिटाना पड़ेगा हमको. Now it is the third equation of motion. Here what we have, x minus x naught, the distance is sometimes given by velocity average into time. भाई आप कहीं पे चल रहे तो अगर आपका एवरेज वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, तो वी कैन वेरी इजीली एस्टिमेट द डिस्टेंस ट्रेवल, कितने भी हमने डिस्टेंस चला है. तो वही निकालने के लिए हमने ये किया x माइनस x नॉट या s इक्वल टू v एवरेज इंटू t. हमको मालूम है कि v एवरेज वही पहले बताया था, v नॉट प्लस v अपॉन 2. ये t के जगह हमने क्या यूज किया, v माइनस v नॉट अपॉन a. कैसे, कहाँ से है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, from first equation of motion, v equal to v naught plus at, we have put t in place of t, we put this. Okay, दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ पर s है, तो v माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as. ये वही है जो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है. सिमिलर थिंग, u की जगह v नॉट हमने लिखा है, बाकी कोई चीज नहीं है. ये ऑलरेडी आपको एग्जिस्टिंग मेथड है, जो कि आपका जनरल मेथड है. कैलकुलस मेथड कैसे करते हैं, अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, v इक्वल टू dv अपॉन dt एंड a इक्वल टू dv अपॉन ds एंड इंटू ds अपॉन dt. देखो यहाँ पर नीचे ds ने यूज किया तो ऊपर भी ds करना पड़ेगा, जिससे कि आपका सिमेट्री में कोई फर्क ना पड़े. डेफिनेशन तो यही है dv अपॉन dt, लेकिन ऊपर नीचे ds करने से फायदा क्या है कि a के साथ ds मिल जाएगा आपको. देखिए मैंने ये ds को खींच कर a मिल गया, a इंटू ds, बाकी को यही रखा. ds अपॉन dt खुद वेलोसिटी होता है, तो उसको एक साथ दीजिए एंड dv अलग होगा, तो v dv यहाँ पे हो गया, यहाँ पे a ds. तो एक इधर का कंप्लीट इंटीग्रेशन हो सकता है, यहाँ कंप्लीट इंटीग्रेशन हो सकता है. इंटीग्रेटिंग, इसके बाद on integrating with limit, what we have, a ds 0 to s limit and v dv v naught to v. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो what we get, just a into s, तो दूसरा पोर्शन 0 आएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, that is v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, and ultimately we get the same formula, v square equal to v naught square plus 2as. This is how we have solved third equation of motion. Okay, we have solved third equation of motion, and only these three equations are the equations of kinematics or the equations of motion. Okay, there is one more motion, one more equation, that is the combination of these equations, that we call as the distance travel in nth second. Sometimes it is written as equation of motion, but that is actually not. Okay, and today's lecture we have taken only up to this, and next lecture we will take the distance travel in nth second plus the relative velocity, and then we finish the chapter. Okay, thank you.